Example 7 of NCERT book. It is an important example. How many two digits numbers are divisible by 3? So first of all, we should know what are two digit numbers. टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए. तो टू डिजिट नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट 10. After 9, the first two digit number is 10 and the last two digit number is 99. 99 के बाद 100 हो जाता है. But it is not divisible by 3. So the first two digit number is divisible by 3 will be what 12. Okay. अब इसका एक तरीका है. ये तो स्मॉल नंबर से तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया. तरीका क्या है? इसको डिवाइड कर दें 10 को 3 से. 3 3 जा 9. लेकिन यहां से क्या मिलेगा 1 रिमाइंडर मिलेगा. ठीक है. तो हम दो तरीके से इसको डिविजिबल बाय 3 बना सकते हैं. या तो 1 माइनस कर दें. 1 माइनस कर देंगे तो ये 1 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो हम यहाँ माइनस करना नहीं प्लस करना है. तो हम इसमें कितना और प्लस करें कि ये डिविजिबल बाय 3 हो जाए. तो इफ यू विल ऐड 2, इसमें 2 और ऐड कर दे तो 3 हो जाएगा. 3 बन जाए 3. ठीक है. तो 2 ऐड करना है. तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 12. अब 3 से डिविजिबल है तो 3 3 प्लस होता जाएगा. और लास्ट नंबर 99. 99 3 से डिविजिबल है. 3 3 जा 9. 3 3 जा 9. ओके. बस आपको ये हटा देना है. These are the three digit numbers. These are the two digit number divisible by 3. So 2 digit numbers divisible by 3 are what this, and these are in AP. These numbers are in AP. If these numbers are in AP, then the first term A, that is A, will be what 12. Common difference देखिए 3 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस 3 होगा. अगर यहाँ 5 से डिविजिबल होगा तो कॉमन डिफरेंस 5 होगा. क्योंकि 5 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल इनमें डिफरेंस कितने का होगा 3 3 का होगा. ठीक है. अब क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं. तो ये लास्ट टर्म हमें पता है. ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म है? अगर 15th टर्म है तो टोटल 15 नंबर होंगे. अगर ये 25th टर्म है तो टोटल 25 नंबर्स होंगे. तो ये लास्ट टर्म जो है an हमारे पास है. an इज व्हाट 99. हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट an इज व्हाट 99. अब ये n आपको फाइंड आउट करना है. 1 2 3 थिंग्स वी हैव. सो वी नो द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d. an is 99 here. A is 12. n minus 1 into d. d is what 3. So 99 minus 12 is equal to n minus 1 into 3. See. So it is 9 minus 2 7. 9 minus 1 8. 87 is equal to n minus 1 into 3. इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 87 divided by 3 is equal to n minus 1. So 3 2 जा 6 और 2 remaining. 3 9 जा 27 is equal to n minus 1. 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 29 plus 1 हो जाएगा. n is equal to 29 plus 1. So n is equal to 30. Means there are 32 digit numbers which are divisible by 3. So you will write here hence the answer. There are 32 digit numbers which are divisible by 3.
Example 8. Find the 11th term from last term of this AP. This is also an important example. From the last means from here you have to find out 11th term. यहाँ से आपको 11th term find out करना है. अगर हम असेंबली हॉल में खड़े हैं और आपको लास्ट से 11th स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट विल यू डू? यू जस्ट अबाउट टर्न द लाइन को पीछे मुड़ा देंगे और पीछे लाइन मिल जाएगी तो पीछे से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 पीछे से काउंट कर लेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे, यहाँ इधर से हम काउंट कर लेंगे. अब इधर से काउंट कर लेंगे तो हम क्या कर देंगे, इस एपी को रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करके और पीछे से हम इसको काउंट कर लेंगे कि जो है 11th टर्म कौन सा होगा. ठीक, तो गिवन एपी इज व्हाट 10 7 4 -62. नाउ ऑन रिवर्सिंग द एपी, इस एपी को हम रिवर्स कर दें. रिवर्स कर देंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -62. देन थर्ड लास्ट इज 4 7 10. ओके, अब हमें यहां से 11th टर्म फाइंड आउट करना है एंड दैट इज वेरी सिंपल. सो द फर्स्ट टर्म इज व्हाट a इज इक्वल टू -62 d. अब d हम यहां से भी निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस माइनस दिस, 10 -7 दैट इज 3. ठीक है, d जो है कोई भी एक टर्म है उसको प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस कर देंगे, सॉरी उसमें से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया. आपको क्या फाइंड आउट करना है, 11th टर्म. 11th term will be what, a plus 10d. a is what, -62 plus 10 into d. d is what, 3. So it is -62 plus 30. That is -32. Okay. So the required, or you may write 11th term from the last term of given AP is -32. ये -32 जो है ये लास्ट से 11th टर्म हो जाएगी. Example 9. Here it is given that a sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. We have to calculate the interest at the end of each year. Means calculate the interest at the end of first year, at the end of second year, and the interest is what, simple interest. Do these interest means interest after each year, means interest after 1 year, interest after 2 year, 3 year, are or form an AP or not, are in AP or form an AP or not. If so, we have to find out the interest at the end of 30 years. Making use of this fact means we have to use the AP to find out the interest at the end of 30 years. So we will find out here interest at the end of first year. We know that it is what, principal into rate into time upon 100. Principal is what, 1000 into rate is what, 8% per annum into time is what, 1 upon 100. 20 cancel, it is what, 8 10 ja 80 rupees 80. Now in the same way, interest at the end of second year. So it is 1000 into 8 into time is 2.
upon 100. 20 cancel. So it is 8 10 ja 80, 2 ja 60. 82 ja 160, sorry, 160. Now interest at the end of third year. So it is 1000 into 8 into time is 3 year now upon 100. 20 cancel, 8 10 ja 80, 83 ja 240. Okay, and so on. So we find out here the three terms and we will check whether these terms are in AP or not. So clearly see the difference of 80 is there. If you find out one more term, see interest at the end of fourth year. So it is principal into rate into time upon 100. 20 cancel. 8 4 ja 32 into 10, 320. Okay. So what we conclude? Interest at the end of successive years are what? Rupees, in rupees are what? It is 80, 160, 240, 320 and so on. And these are in what? AP. If these are in AP, then the first term is A is equal to 80. And the common difference D is what? 160 minus 80, that is 80. Now we have to find out. First term is interest after first year, second term is interest after second year, third term is interest after third year. So we have to find out interest at the end of what? 30 years. So interest at the end of 30 years is equal to what? 30th term, or this will be what? A plus 29D. A is what? 80 here plus 29 into D. D is what? Again 80. Okay. So we will find out, calculate it. You will get 2400 rupees. So at the interest at the end of 30 years will be what? 2400. Example number 10. In a flower bed, there are 23 rose plants in first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on. There are 5 rows in the last row. 5 rows are in the last row. How many rows are there? How many rows are there? Means we have to find out number of rows in the flower beds. So first of all we will write here the numbers of rose plants. In successive rows are what? It is 23, 21, 19 and so on. Okay, observation कर ले यहाँ देखिए 23 minus 2 is 21, 21 minus 2 is 19, common difference same है, means these are in AP. Okay, if these are in AP, then the first term is 23 and the common difference is 21 minus 23, that is minus 2. This is common difference.
And the last term is given here. Last term is nth term. Nth term, that is the last term. Yes, here this is the last term. Okay, it is also represented by L. And the formula for nth term and last term is same. It is what? A plus n minus 1d. Okay, formula for last term and nth term remains same. Okay, so the last term means here an, nth term is given 5 or last term is given 5. So in place of nth term, here you write we know. Okay, in the place of nth term you will write 5. A first term is what? 23 plus n minus 1d. N means number of rows that we have to find out. D is what? Minus 2. See, it is 5 minus 23 is equal to n minus 1 into minus 2. 5 minus 23, it is minus 18 is equal to n minus 1 into minus 2. ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, दैट इज माइनस 18 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 2 9 जा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 9 n माइनस 1. सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 इज 10, तो n इज इक्वल टू 10. So how many rows are there? So there are 10 rows in the flower bed. That will be the answer. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो